अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अपने चैनल नॉलेज फॉर ऑल में आपको वेलकम करते हैं। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, हम कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं। जितने भी प्रीवियस एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, वन पेपर एमसीक्यूज़ की बात कर रहे हैं। जितनी भी टेस्टिंग एजेंसीज हों या जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स हों, डेटा एंट्री ऑपरेटर, केपीओ, कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क, या उसके अलावा भी जितने भी कंप्यूटर एमसीक्यूज़ आते हैं, उसके साथ साथ कंप्यूटर की तमाम बेसिक नॉलेज वो भी इंशाल्लाह ताला इस तमाम एमसीक्यूज़ बैंक में शामिल होगी। दोस्तों, वक्त को ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, अपने सवालात की तरफ। द लेंथ ऑफ आईपी एड्रेस इज 32 बिट्स। आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। Facebook was launched in 2004. The docs file contains MS Office Word. The file extension DLL stands for Dynamic Link Library. हमारा अगला सवाल है, The extension of a MS Access database is MDB. The key combination used to permanently delete a file from Windows computer. Shift plus delete. अमूमी तौर पे जब हम कोई किसी भी चीज़ को डिलीट करते हैं, कोई भी फोल्डर, कोई भी फाइल या कोई भी मीडिया फाइल जिसको हम डिलीट करते हैं, तो वो अमूमी तौर पे जो हमारा रिसाइकल बिन होता है उसके अंदर शिफ्ट हो जाती है। अगर हम इस शॉर्टकट की को, इस कमांड को यूज़ करें, शिफ्ट प्लस डिलीट को, तो परमानेंट डिलीट हो जाती है। अगला सवाल, शॉर्टकट की टू ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट, कंट्रोल प्लस एन। डेटा इज परमानेंट स्टोर्ड इन हार्ड डिस्क। दोस्तों, में भी अगर ये आपके पेपर में सवाल आए तो उसमें आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन हों, जिसमें रैम, रोम, कैशे कुछ भी हो। अगर उसमें हार्ड डिस्क है तो हार्ड डिस्क आंसर होगा। What are the steps to upgrade a 32-bit version to a 64-bit version of Windows? तो आंसर इसका ये है कि it cannot be upgraded. अगर आप में से किसी दोस्त का कभी इत्तफाक हुआ विंडो इंस्टॉल करने का, तो उसमें कुछ वर्जन्स आते हैं 32 और 64, तो ये उसकी बात कर रहा है। To change a lowercase letter to uppercase and uppercase letter to lowercase, select. तो हम क्या सेलेक्ट करेंगे? सेंटेंस केस। CSS stands for Cascading Style Sheets. The general format of URL is as follows. URL जो होगा उसका जो फॉर्मेट है वो क्या होगा? अगला सवाल, द कंप्यूटर एब्रिविएशन OS stands for ऑपरेटिंग सिस्टम. The shortcut key to delete a file without sending to recycle bin, shift plus delete. दोस्तों, हमारा अगला सवाल है, how many version of Windows 8 for PC have been released? 3 versions. A group of 8 bits is called byte. To subscript a text, shortcut key is क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस, जिसको हम कहते हैं ना लेस देन, वो उसको प्रेस करेंगे तो हमारे सब्सक्रिप्ट होगा। द फाइल एक्सटेंशन JSP stands for Java Server Page. दोस्तों, हमारा अगला सवाल है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WWW? तो उसका आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब. द माइक्रोफोन कन्वर्ट्स साउंड इनटू electrical signals. A device which connects multiple nodes to the network is hub. Windows 7 was released in which year? 2009. What is Windows XP? Windows XP एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसा कि Windows 7 है या कोई और Windows है। अगला सवाल है, ATM stands for Automated Teller Machine. GIF is an GIF या GIF is an extension of which type of file? Image. Who is the founder of IBM company? Thomas J. Watson. Volatile memory दो किस्म को थे, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल। तो वोलाटाइल रैम है और नॉन वोलाटाइल रोम। When you delete an object, Windows XP sends it to recycle bin. फ्रेंड्स, इस किस्म के जो सवालात आते हैं कि विंडो एक्सपी उसको कहाँ सेंड करेगी रिसाइकल बिन में, तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी विंडो